all I have chosen. A second order system has a transfer function this with RT as a unit step. Okay, so input is a unit step. The response CFT of the system is represented by. Now, okay, now row number 9 will answer this question first. How we can solve this numerical fast? इतना time नहीं है. I'll सर take हम some. देखेंगे इस ये डैम्प अंडर डैम्प्ड है ओवर डैम्प्ड है. But then overdamped. Okay, let me say that this is an overdamped. Then what is the graph? अगर ये ओवर डैम्प्ड है तो ये होगा डी फोर्थ वाला. If it is क्रिटिकली डैम्प तो बी, अगर अंडर डैम्प तो ए. okay, anything else? No. Third is not possibility. Is there possibility? Tanzib, third for third. नो सर. इसको कैसे solve करना है? Can you solve this? किससे पता चलता है हमें? Roll number 9 I am asking you. From which? यस सर. सर From इसका where पॉइंट, you get it? इसकी डैम्पिंग आ रही है 0.5, Okay. तो इसका ये होगा अंडर डैम्प्ड, तो ए होगा. इसकी डैम्पिंग 0.5 नहीं आ रही है. You are wrong. की डैम्पिंग 1 आ रही है and this is वन. critically damped. What? यस 1. सर, So यस that's वन option वन. number second. Why you are confused? मुझे समझ नहीं आ रहा है कितने क्वेश्चन मैं करूंगा अब. सही जाई क्या आ कैलकुलेशन. रहा है? यस सर, वन आ रहा Are है you not ओमेगा able to एन. क्या जो whatever I am teaching you, are you not able to get it? यस सर. No, seriously tell me, is there any problem? नो सर. Then why you are not able to answer? This is a very simple question, characteristic equation. You are right. You have to compare and find the value of xi. Two values will be already there. So which option is correct? बी. What is the value of xi you have given? 1 now, huh? वन. Okay. Okay. Now let's solve it very fast. Roll number 9 is correct this time. Don't get confused. Be confident. So R of t is what? It is unit step function. I think my pen's lead has also gone, so I have to replace it. I have got some more. So tomorrow I'm going to replace this, I think. So CFT response we have to find. I have given you some hints that this is not regarding the question. So I'll always repeat these things because these are important for gate examination, other point of view. DC gain S is equivalent to 0. So transfer function G of S is going to become what? So transfer function is C of S by G of S 4 divided by 4, that will be 1. So that is output by input will be in Laplace transform, that will be 1. Now if we take S equal to infinity, then transfer function G of S will become 4. Just a second. कॉल ऐसे फोन. हाँ आकिब, हाँ मैंने इखलाक सर से बात की है, वो खुद ही आ रहे हैं. ठीक है, ठीक है. Okay, so this is 4 plus infinity and plus it will be, I think, 4 s square. What is that? This will be plus 4 then. So, but anything added to infinity is infinity. Anything divided by infinity is 0. Okay. So this is a second order low pass filter for a system having DC gain equal to S is equal to 0, then it is equal to 1. This is a second order low pass filter. So we know low pass filter, what it will do. It will pass, it will allow the system, system allows to pass at low frequency and it will attenuate at high frequencies. That we know, we have seen, I think you have seen in the what you call the basic electronic second or whatever you call it. So just to mention for your, we can represent system can be represented
बाय, हर एक चीज को अच्छी तरह लिखना चाहिए. नोट्स पर्टिकुलरली जो आप नोट्स बनाते हो, दे शुड बी वेरी गुड, सो दैट व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट. तो मेरी एक आदत है, मैं एक हर एक चीज को अच्छी तरह बना लेता हूँ, एंड देन आई ऐड अ क्वेश्चन. अगर मुझे लगता है ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है, एवरी ईयर आई ऐड देम इन द in my notes. Variety of questions you should have in notes. So if DC gain is 1, you know that we can have K here, that is DC gain is 1. Then K value is, K is DC gain will be at that time as 1. So you don't have to write the value of. That's why we don't write the value of. This is the phenomena behind it. This DC gain is 1. So K value is equal to 1. So we don't write it. Anyway, now comparing this characteristic equation with the standard general second order equation, comparing the characteristic equation of standard second order system, these things you don't have to write in the gate examination. This is for your notes. With characteristic equation given in question. So what's that characteristic equation? Second is you have to memorize this now. 2 xi omega ns plus omega n square should be equal to 0. So this is 1. That's a general second order system. What is given to us? Simply denominator of the question. That is s square plus 4s plus 4 should be equal to 0. If you compare them here, so 2 xi omega n, the coefficient of s will be equal to 4. And here we can write xi omega n will be equal to 2. Okay, you can write it equation third or whatever you want to write. So comparing this frequency, omega n square is equal to 4, then you can simply write omega is equal to 2 radians per second. Okay, we always take the magnitude, we don't take the plus minus here. So xi you can obtain from the equation number third. Xi will be 2 divided by omega n, that is 2 divided by 2 will be 1. So once you have got the value of xi, so we don't have to do anything. What we have to do, we have to look into the graph. Xi means it's a option 2 for a critical damped response. So this system will be critically damped system. Okay, critically damped system. Now, if answer would have been 1.5, roll number 6, what would have been the answer? 1.5. Which option we have to correct? Now, at current, option 2 is the correct answer. If xi would have been 1.5, shabash. Roll number 6 is not there. Rutba. यस सर. सर मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी आधा क्वेश्चन जब तक आपने सॉल्व किया. मुझे स्क्रीन भी नहीं आ रहा था तो मैंने रिज्वाइन किया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूरा नहीं देखा. Okay, Rutba. What should be the answer if the xi value is 1.5? That is all damped system. Which option we have to take? The last option. Very good. Tanzib, Yes, sir. if the option is none of them is option here, okay, Yes, sir. and the value is 0.5, Yes, sir. which option we have? We have first option is same as it is, second Yes, option sir. is same as it is, fourth is same, and third option we have none of this, and the value of Yes, sir. xi is 0.5. Which option we have to answer? Sir, under damped, पहला वाला. Okay, that's fine. So for your, should I again draw those graphs for underdamped for your revival, for your memory? I don't think. You think, or I will draw it. But
Tell me what is the difference between these two? There are two. What is the difference between roll number? This is a discussion class. Maybe it will take some more. Sorry, it will take some more time. We don't have to worry about that. Okay. Okay. Roll number 7, Bisma. जी सर. Can you tell me if there is asked a question, what is the difference between the critically damped and over damped system? What's the difference? क्या सर difference है? ओवर डैम्प्ड में जो जीटा होता है वो ग्रेटर देन Zeta 1 के होता बगैर. है. I need answer in terms of the response. Zeta is fine. I agree with you. Zeta नहीं दिया है तो अगर कुछ लिखा हो वहां पे, a statement is given, then how I can justify? Okay, difference between what? Critically damped system and critical damped system and what? Over damped system. जल्दी जल्दी टाइम नहीं है इतना. ओके. सर जो क्रिटिकली होता है उसमें वो इमेजिनरी पार्ट्स नहीं होते हैं. मैंने रिस्पांस का भी कहा था. आप याद नहीं ना रखते हैं. याद रखे हमेशा के लिए. शुड रिमेंबर नाउ. Critically damped system has fast response. See here, this has got fast response. सबके अपने अपने एडवांटेजेस मैंने कुछ बताया था. Critically damped system has got fast response, while over damped system has slow response. This will have slow response. ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताया था प्लांट में क्या होता है. अगर आपको याद हो, हर एक चीज याद रखने वाली चीज होती है. जो मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, डैम्पिंग ओवर डैम्पिंग होती है तो रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है. आई थिंक रोल नंबर 6 मैंने कहा था कि नहीं. प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने एक ली थी. यस सर, यस सर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. ये एग्जाम में सीधे ऐसे ही आता है. गेट एग्जाम में आ सकता है. 4 ऑप्शंस आएंगे. क्रिटिकली डैम्प्ड हैज फास्ट रिस्पॉन्स, स्लो रिस्पॉन्स, नाइदर ऑफ देम दिस. So critically damped, you should always, it's a very good having a fast response, and you can see from the graph also. Critically damped will have a very fast response, whereas the over damped system will take time to reach to the steady state value. You can see very good response, very fast it is approaching towards us, and it is taking a lot of time to reach the steady state value. That's the difference. So these are some tidbits. You have to always remember these things. Okay, fine. Let me go to the question number 2. Gate 2011, this has been asked. I think instrumentation, or this is not from electrical, but this can be asked in the electrical also. Come back to, let's come back to roll number 35, Farzana. Farzana? Roll number 35. अस्सलाम सर. भागने की जरूरत नहीं है क्लास में. आई एम ए टीचर. मैं सबको देखना चाहता हूं कि यू आर डूइंग गुड. देयर इज नो इंसल्ट. इसमें किसी की इंसल्ट नहीं होती है. नहीं आता है कोई बात नहीं. स्टूडेंट्स को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था अपने टाइम में. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. यू शुड स्टे हियर एंड ट्राई टू लर्न. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. नासिर कहाँ गया ये रोल नंबर 63? ओके. Farzana, how can we solve this numerical? तो इंटेंशनली क्लास से चले जाएंगे ना. आई विल नॉट लीव देम आफ्टर दैट. मुझे पता है कौन कौन जा रहा है. स्टे हियर और क्वेश्चंस का देख लीजिएगा. नहीं आ रहा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. होता है. फरजाना, कैन यू टेल मी हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल? जल्दी जल्दी. ये गेट का न्यूमेरिकल है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं होगी. द डिफरेंशिएशन इक्वेशन इज गिवन. Describe system with an input xf and output y of t. It's a time domain system. The system which is initially it is relaxed, is excited by a unit step input. The output y of t can be represented by which of the graphs? You cannot tell directly the graphs. You have to solve it.
what should be the approach from where we can get, ये एक थोड़ा सा typical question है लेकिन you can solve it. रुतबा 27. यस सर सर इसको मैंने जब लैप्लस किया ना वो आता है 100s y of s plus twice s y of s plus I y need of xi value. सर I वहाँ will पे not go मुझे after the calculation. सर मुझे नहीं मुझे क्या है? यस सर मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकल रहा है y of s डिवाइड बाय x of t मतलब Fine, I am not after that. मैंने कहा ना मुझे xi की वैल्यू सर बताइए. वेट मैं What कर you रही are? हूँ हाँ, सर करो अभी जल्दी. Make it fast. Today थोड़ा टाइम लगेगा हमें. We will discuss it. I want to see the response from the students. Or everybody is requested to switch on your, what you call it, your cameras. अब on कीजिए सारे cameras अब आज आपने. तंजीब रोल नंबर 63 Yes, sir. और भी 2-3 थे, वो वापस क्यों नहीं आए? पता नहीं सर, मैं 63 किया मैंने नोट, आपने बोला था. 2 और थे. ये 54, why he has also left? सर फिर पहले ले अभी एक लॉग. आप ले लो log. ओके सर. Okay, switch on please. All of you are requested to switch on your videos. Roll number 9 and all these people, switch on your videos. Okay, you're requested to switch on your videos fast. Okay, Rudba, have you got this question? "32" कौन है? Who is this 32 roll number? यस सर Why your videos? Switch on your video. कोई बात नहीं. Girls अगर नहीं करना चाहती हैं तो no problem. That's your choice. नहीं करना चाहती तो नहीं, क्योंकि मुझे पूछना था आज क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ. अदरवाइज आई डोंट नीड. हाँ जी रुतबा, व्हाट इज द आंसर नाउ? ना टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें थोड़ा है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन. रुतबा यस सर सर मुझे नहीं निकल रहा है इसमें मुझे जब मैं एस दे रही हूँ ना 0 वहां पे मुझे आ रहा है 1/100 जाय की वैल्यू क्या आ रही है, मुझे बस इतना बताओ. 1/103 कैसे आएगा 103? आपने कुछ गलत किया होगा ना. कोई वॉलंटियर, रोल नंबर 10, रोल नंबर 27, 54, 33, ये 0.5 सारे 0.5. आप हर एक में 0.5 ही लगा रहे हैं बस. ओके, लेट्स सी. ये न्यूमेरिकल आसान है, आई डोंट नो. रुतबा को भी नहीं आया, दैट मीन्स देयर इज x of t is given as step input. Okay, and y of t is given the response output. Okay, now taking the Laplace transform of the differential equation, which is given above. Okay, this is given 100. I can memorize it. So I will as square, then this will come as y of s minus 20, and d by dt will be s y of s, and sorry, then it will be plus. Okay, that is y of t means y of s is x of s. I think this is the one. Yeah, this is the one. Okay, so y of s I can get common in this case. Y of s will be 100s square minus 20s plus 1, and that will be equal to x of s. So output by input I require. Output by input is a transfer function. That is 100s square, sorry, 1 by. That is 1 by okay.
So since I require it in the standard form, so I will write it in the standard form. I can take this 100 above, and 100 I have taken common as square. 20 by 100 is 1 by 5, s by 5, and this should be 1 by 100. Easy mathematical manipulation, because I have to compare it. Now here I am not going to write the complete details here. Comparing with standard second order equation. You have to understand this now. I can't write every time so much. 2 xi omega ns plus omega n square is 0. So when I am compare what I have to compare it with? S square minus s by 5 plus 1 by 100 equal to 0. I have to compare it with this. Now from this what I am getting is 2 xi omega n, I am getting 1 by 5. रुतबा इसमें क्या प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं समझ आता है. सर मैंने वहां पे लिया था 100s प्लस 2s, इसीलिए मुझे नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे 100. ये नहीं ना होना चाहिए. क्यों आप ले रहे हैं स्टैंडर्ड? यहाँ पे आपको बनाना है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर शुड बी 1. इसमें क्या नई बात है? तो कोई नई बात नहीं. इट्स नॉट न्यू, समथिंग न्यू को हम नया कुछ कर रहे हैं. एनीवे नो प्रॉब्लम, ट्राई करना है एटलीस्ट. आंसर गलत आ सकता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. उसके लिए डरना नहीं है. So that should be 1 by 5. Okay. Xi we have. Okay. Have we got xi or not? No, this is 1 minus 1 by 5. Sorry, xi will be minus 1 by 5 into 2 into omega n, which is 1 by 10. Okay. 2, 1 by 5, but that's minus, fine. So 2 by 5, 5 by 5 will cancel. That will be minus 1. Okay, I want to write it properly here, minus 1. Now xi you have never seen equal to minus 1. Sir, ये तो हमने देखा ही नहीं है, इसलिए क्या बता रहे हैं आप नया? What is xi equal to 1? Positive critical damping, है ना? What is the response of the positive critical damping? आज ये question बड़ा important है, देखो. So if I am talking of the positive critically damped system, थोड़ा सा आईआईटी के प्रोफेसर्स ही होंगे ना. दे आर वेरी गुड. सॉरी. So what will be the response now? It is critically damped, so that is response. Response is fast in this case, so that will move faster to steady state value. There will be no. This is the response. Please forgive me for the diagram because I don't have any software to make it fine-tuned. So this is xi. We have a fast response because we are reaching fast responses. In this case, xi is equal to 1. But then we are getting a xi equal to minus 1, so that means negative damping will be there. Negative damping will provide unstable system. So if xi is equal to 1, so we will have negative damping. Xi is equal to 1, and that will make system unstable. That's for sure. So option 1, you can have a look, see. Option 1 is what? This is your critically damped, sorry. This is something critically damped should be like this. But once there is a negative damping, then this has to happen. Overdamped, yes, underdamped cannot be there, and this is not any response. We're not getting this type of response anywhere. Out of these first and third, there is confusion, but since xi is not positive, so we can't get this type of response is number option. So xi is negative, so we are getting negative damping. So that's the option here. See, a bit he has changed only, but options you can choose. I hope everybody has understood this. Anji.
नहीं समझ आया? रोल नंबर 10, 9 रोल नंबर, यस सर। समझ आया कि नहीं? हाँ मुझे तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? सर मुझे फिर से हो गई कैलकुलेशन एरर इसमें। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप बार बार कैलकुलेशन एरर होती है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट नाउ यू आर आज ही हो रही है, पता नहीं क्यों। आज ही हो रही है। चलो रुतबा, इट इज क्लियर? Yes, sir. So this is the way you have to do it. Or next question. Gate 2015, this has been asked. The output of a standard second order system for a unit step input is given. This is the output, but it's in terms of the cost. So you can either make it a standard, because you know our response is y of t is 1 minus e raised power minus xi omega t divided by under root of 1 minus xi square sine omega dt plus phi, where phi is tan inverse under root of 1 minus xi square divided by xi. So you can change sine to cos. So I'll give you 2 minutes. You need to solve this question. तंजीब, आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। तंजीब, roll number 31. Are you getting something or just? Roll number 31, 39, 39. Yes, sir. Roll number 1, Ehtisham, what you are doing? यस सर। आपको समझ नहीं आ रहा कुछ? जी सर। तो मैं 32, सॉल्व। who is roll number 32? Yes, sir. ओके बेटा, चलिए। $31, Basila 24. Are you getting something or not? Huh? Okay, Rudba, I will ask first. Roll number 6 को आज पूछ ले। Roll number 6, Yes, sir. what can be our approach? Yes, sir. cos को साइन में कन्वर्ट किया, तो आपने क्या किया फिर? साइन 90 प्लस थीटा आपको किया। निकालना है, क्या निकालना है आपको? ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। क्या ट्रांसफर फंक्शन का ऑप्शन आया आपको? निकाला अभी आपने? नो सर, ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकाली। चलो करो जल्दी, मेक इट फास्ट। तो ये किसका रेस्पॉन्स हमें दिया है? हाँ, रोल नंबर 6। सेकंड ऑर्डर सिस्टम, सो स्टेप रेस्पॉन्स। किसका? कौन सा रेस्पॉन्स है? रेस्पॉन्स तो 4 है ना, उनमें कौन सा रेस्पॉन्स है? अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स अंडर है। डैम्प्ड, यस नजर आ रहा है आपको? हाँ, सर। यस सर, अंडर डैम्प्ड और साइनोसॉइडल है। जिसका आंसर आया वो मुझे बताएगा आंसर किसका है। सर फोर्थ वन। हु इज दिस? सर रोल नंबर 12। रोल नंबर 12, वेरी गुड। फोर्थ वन, एस स्क्वायर 4 बाय एस स्क्वायर प्लस, या दैट्स करेक्ट, वेरी नाइस। जो ये आंसर दे रहे हैं, रुतबा ने एक आंसर दिया अभी तक गेट का,
और आपने दिया है. रोल नंबर 12. What is your name, beta? Sir Faizan. Very nice. Very good. What is your approach? How you have done it? सर मैंने कंपेयर किया इसको माइनस जीटा ओमेगा एन टी को किया कंपेयर उससे माइनस टी से आपने किस में कॉस में लाया, इसको साइन में लाया? दोनों से कर सकते हैं. यू कैन नॉट. मैंने वो किया ही नहीं. मैंने ई रेज पावर जीटा ओमेगा एन टी है ना उसको माइनस टी से कंपेयर किया. वहां से मुझे जीटा और आपने ओमेगा. आपने रिस्पॉन्स से टाइम पीरियड से किया. जी सर. दैट इज वेरी गुड. अगर आपने किया है दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट. आपने टाइम रिस्पॉन्स से किया. टाइम कांस्टेंट इज 1 बाय जीटा ओमेगा एन, उसी से. नो सर मैं ई रेज पावर जीटा एन है ना ई रेज पावर हाँ, मैं उसी को किया कंपेयर माइनस टी से. फिर वहां से वही मुझे हो गया ना. वही टाइम कांस्टेंट ही है ना. मैंने क्या कहा, e रेज पर -80 मैंने कहा था. रेसिप्रोकल ऑफ दैट इज टाइम कांस्टेंट कहा था ना. जी सर. जी सर. वही जी कर सर. रहे हैं आप बेसिकली. आप पता नहीं कह नहीं रहे हैं, लेकिन कर वही रहे हैं आप. जी सर. फिर आपने क्या किया उसके बाद? उसके बाद मैंने एम्पलीट्यूड को किया कंपेयर 2√3 को 1 बाई जीटा 1 माइनस जीटा स्क्वायर से. तो जीटा स्क्वायर आपका 1/4 आ गया. जीटा आपका 1/2 आ गया. 1/2 आ गया. ओमेगा एन ओमेगा 2. 2. जी सर. तो आपने बना दिया. दैट्स ऑल. वेरी नाइस. वेरी गुड. और कोई? रोल नंबर 12. Okay, let me do it. This much of time you should take. Otherwise, you are lagging somewhere. Okay, now I will show you two methods. I have three methods. I can solve it. Cos को sin में कर सकता हूँ. Cos को cos ही रहने देता हूँ, या टाइम कांस्टेंट. दो मैं दिखाऊंगा आपको. तीसरा आप साइन वाला खुद ही कीजिए. Y of t is equal to this. So I can write this y of t will be equal to 1 minus e raised power xi omega n t. ये थोड़ा लंबा है, लेकिन सारे मेथड आने चाहिए. यू शुड बी कंफर्टेबल विथ ईच. तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा एन टी, सॉरी, ओमेगा डी टी प्लस फाइव minus pi by 2. Now, as we know, add sugar to coffee. So cos in case of first quadrant is positive. Everyone is positive. Cos 90 minus theta will be sine theta. Okay. So cos of minus theta is minus cos theta. So I don't have any problem in writing this. I'll put minus here, and I will put cos of minus theta is always positive. So that can be also written as sine theta. Mathematics you have to know. Engineering without mathematics is nothing. So I will compare equation second. This equation I will call it a second equation with a given equation what is in the question. So given is 5 minus pi by 2. Question you can see 5 minus pi by 2 is here. Okay. Here we have 5 minus, I have written theta, but this is general formula. 5 minus pi by 2 I will compare with what? Minus pi by 6. That is same. Minus pi by 6. So what I am going to get? I am going to get phi as minus pi by 6. That is pi by 2 minus pi by 6. That is pi by 3, and that is a 60 degree. Okay, once I have got that, phi is the angle of inclination, and we know that. We know that from the damping ratio triangle, cos phi was equal to xi. You have to remember all those things. So 5 is equal to cos inverse of xi. So I can get the value of xi here. Xi will be cos of 60 degree, and the value of xi I can easily obtain. See, if you know all these things, it's very easy. Xi is equal to 0.5. This is from the damping ratio triangle. I have drawn that triangle number of times, but now is the time for the implementation. So we can clearly see, since xi is equal to 0.5, so response is underdamped. Response is underdamped. Now we have got the value of xi. So you compare this omega d here on the top of this. So coefficient of t is -1. Okay. And this omega d is in this case under √3. So comparing the equation, you can get omega d is under √3. Okay, radians per second, whatever will be from question itself. This is from question because we'll compare that. This value is from question.
Omega d we know is omega n under root of 1 minus xi square, and that value is equal to under root 3. So we have the value of xi, we can get the value of, I can square it, omega n square, 1 minus xi square is 3. I have the value of xi, so omega n square xi value is, I think, 1 by 2, that will be minus 1 by 4, 3, and omega n square will be 3 into 4 minus 1, that is 3 by 4, that will be 4 by 3. So that will equal to 4 by 3 is equal to 4. So omega n will be 2 radians per second. Fine, up to here. So you can easily find the transfer function. Transfer function is what? T of f is kn square, because dc gain here will be obviously 1. So you can generally write omega n square s square 2 xi omega ns plus omega n square. Omega is 2, that will be 4. I will directly write all the answer. You can do the calculations later on. S square plus 2 xi is 1 by 2. 1 by 2 is gone with 2. Omega n is 2, so that will be 2s, and plus will be 4. So this is a very simple approach. Very simple approach for a gate. Gate 2015, this was asked. Whatever I have taught, if you remember that, then there will be no problem. Okay, next, method 2 also I want to. Some people, I think roll number 12 has done the method 2, but so I have told you that time constant tau is in this case reciprocal of the coefficient of t. In the very first class, when I was talking about the first order system, the same approach will be here on. So that is the magnitude. We don't take sign. So in this came 1 by xi omega n. That's the time constant. So that is equal to 1. So xi omega n is equal to 1. And also omega d is given in the question as under root 3. And omega n is under root of 1 minus xi square. That will be under root 3. Okay, so omega n we can find from this equation. Omega n will be, this is a time constant approach. Please understand that what is the coefficient of this one in the second order system here. Here in the previous question it was. So this xi omega nt, that is a time constant approach we are doing. Reciprocal of that will be time constant. So that is equal to 1. You have to compare that with the given equation of the second. That's what I am comparing. Omega d I have compared. Omega n I have got 1 by xi. I will substitute that 1 by xi here. 1 by xi under root of 1 minus xi square is under root 3. Now what I am going to do, I am going to square this. So 1 by xi square, 1 minus xi square will be equal to 3. So that is 1 by xi square minus 1 is equal to 3. So that is equal to xi square will be equal to 1. This will come on this side. Okay, that will be 1 by xi square will be 1 by 4, and that xi will be 1 by 2. This is clearly an underdamped system. You can see omega n we have already got equal to 2. You can find, no, we have not got still. So omega n you can get is 1 by 1 by xi, that is 2 radians per second. Rest is the same story. You can drop it here. 2 approaches. Third approach can be also done. We can change this given cos into sine. So that will be sine 90 plus theta. So you can compare it with the general equation and you can solve it. I hope this is clear. Rule number 12. Yes, sir, clear. You can find any approaches. Okay, next question. Next question is also very important. GATE 2018, it has been asked. Yeah, I think GATE 2018, it has been asked. Okay, you can solve this question. Step response of a negative unity feedback system with open loop transfer function is given. This is an open loop transfer function. And its step response is also given. Clearly an underdamped system. Value of k you have to find fast. There's no option, but you have to calculate it and then
Write the value there. Roll number 9, 6. Yes, sir. Solve it fast. मुझे Yes, sir. प्रॉपर्ली कोई आंसर देना चाहिए आप. बुरहान, रोल नंबर 6. यस सर। वीडियो ऑन करो अपना. सर लैग आता है इससे, इसलिए मैंने बंद किया वापस। क्वेश्चन तो सॉल्व करो ना. अगर लैग आ रहा तो उसमें तो लीड आना चाहिए. यस सर। सर क्वेश्चन आप एक बार फिर से दिखाइए। So on the screen, question is on the screen. Today is the last class for this one. Now we'll move to the errors in the next class. कुछ इसके बाद क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे. नहीं होंगे तो आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस. वो डिफिकल्ट नहीं है वो. ओके, फास्ट. रुतबा, यस सर. हैव यू डन इट और नॉट? सर कर रही हूँ. इतना टाइम क्यों और ले रहे हैं आप? सर 8 गलत है. कि 8 कैसे आ सकता है? इट्स 2. आप वाया जो 0.8 का मतलब क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 0.8 गिवन हियर? सर फाइनल वैल्यू तो फाइनल वैल्यू स्टैटिक क्या होता है? वाई ऑफ इन्फिनिटी होता है कि नहीं? स्टैटिक यस सर. लेकिन फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है? वो मैंने भी बताई थी आपको नेटवर्क में. ये आप यहाँ पे यूज कीजिए, देन यू विल गेट द आंसर. एक हिंट मैंने दे दिया. आप नाउ टेल मी द आंसर रुतबा. वाई ऑफ इन्फिनिटी इज 0.8. वाई ऑफ एस जो भी है आपका, के डिवाइड बाय सर समथिंग वो जो भी. 8 ही आ जाता है शायद. आंसर क्या आ रहा है? 8 ही आ रहा है. 8 सर. सर 2 आता है। 8 कैसे है? 2 कौन बोल रहा है? 12 रोल नंबर सर 5। 5. वेरी गुड. 2 आना चाहिए. रॉन्ग. ओके, लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन्स. रुतबा, वाई योर कैलकुलेशन क्यों गलत हो रही है आपकी? सर इसको जब हम S0 देते हैं ना, वहां पे बचता है ना सिर्फ 1 दैट इज रॉन्ग. मैं कह रहा हूँ दैट इज रॉन्ग. दैट्स ऑल. सर 8 ही गलत आ रहा है, कर. लेकिन हाँ, 8 मुझे भी आ रहा है 8 ही। उससे क्या हुआ? वो सर 8 यूनिवर्सल, ही आएगा. वो यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाएगा अगर आपको 8 आ रहा है. सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. बट बेटा कैलकुलेशंस आप क्लियर कीजिए ना. तो रोल नंबर 5 इज करेक्ट. नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन. नाउ सी द अप्रोच प्लीज. तो ये हमारे पास दिया है. जस्ट आई एम ड्राइंग. प्लीज अपना ऑडियो बंद कीजिए सारे. डिस्टर्ब. रोल नंबर 6, why you are not able to answer any question? यस सर, वो किए थे, टाइम थोड़ा लगता है लेकिन होते हैं सॉल्व. नहीं, टाइम को तेज करना है, टू मेक इट फास्ट. मेरा क्या है इतना क्वेश्चन कराने का? सो दैट यू शुड गेट बेनिफिटेड. अदरवाइज मैं 4 क्वेश्चन करा के आगे चल दूंगा. मुझे नहीं. यू हैव टू गेट बेनिफिटेड, अदरवाइज कोई फायदा नहीं मेरा इतना. आई एम मेकिंग यू टू वर्क सो हार्ड. दिस इज द नेगेटिव फीडबैक एंड ही इज टेलिंग अस नेगेटिव फीडबैक यूनिटी. दिस इज द सिस्टम भी पता होना चाहिए ना कैसे बनाना है. ये एग्जाम में नहीं करना है. बट so open loop transfer function is given, but we need to find the closed loop transfer function. Step is also given. Unity feedback system with open loop transfer function given this one. Okay, so this is given. Let us see. R of s. Now we'll find a closed loop transfer function of this one, that is g of s. 1 plus g of s. H of s is 1. We don't need to have to write it.
So y of s by r of s in this case is k divided by, this is, what is that, s plus 1 whole square. Yeah, s plus 1 square whole square plus s plus 2. Okay, divided by, then this is 1 plus k s plus 1 whole square into s plus 2. To solve it, k divided by s plus 1 whole square into s plus 2 whole divided by s plus 1 whole square into s plus 2 plus k divided by s plus 1 ये divided ऐसा आ रहा है, this means पूरे को divide है, s plus 1 whole square, इसके साथ इसको multiply किया मैंने, add किया k and s plus 2, तो denominators तो इसके चले गए. So y of s, just I am doing every step for all the students because I know some of the students may be wondering what's happening. Plus k plus k, that will be k plus s plus 1 whole square into s plus 2. So denominators will go. So I can write y of s is equivalent to k divided by s, I can write s plus 1 whole square s plus 2 plus k into s. Now what is step input is given in this case? I think yes. Unity feedback step response is given. Yeah, step, that means step input is given in this case. We don't have to worry about that. So now very important here is that y of response value at steady state is given. That is always at infinity. Two values we always check. See here, y 0.8 is given. That means what is given from figure, y of infinity is given, that is 0.8. So we'll apply final value, applying final value theorem. In this case, what is going to happen? So we can say y of infinity will be limit s tends to 0 s into y of s. So y of infinity will be limit s tends to 0 s into k divided by s into s plus 1 square s plus 2 plus k. Okay, s and s will get cancelled. So y of infinity, we can put the value as 0.8. So this value s and s gets cancelled. K value will be, this will be 1 square. Okay, that will be 0 plus 1 plus k. I hope this is correct. This is 0 plus 1 square and this is 2. So this is, we can write it 8 by 10. Calculations should be done very nicely. K divided by, that is 2 plus k. So I will cross multiply it. Cross multiplying it will get 16 plus 8k will be equal to 10k. So k I will take on the other side. So that is 2k will be equal to 16. K will be equal to 8. So whosoever has got 8, that should be. हाँ रुतबा, आप क्या mistake थी? What was the mistake? तो हम 8 ही बोल रहे थे, आप 2 बोल रहे थे. 2? मैं क्या 2 बोल रहा था? तो आप 2 बोल रहे थे, 2. नहीं, मैंने तो 2 नहीं. जी सर. या 2 ही करेक्ट है ना, मैंने गलत लिखा है. 2 ही करेक्ट है, जो मैं बोल रहा था वही करेक्ट है. 16 डिवाइड बाय 2 क्या होता है?
8. हमें गलत तो नहीं आया फिर 8 जस्ट अ सेकंड नो 8k इज जस्ट अ सेकंड मैंने कुछ गलती की है दिस इज 2 8 2 16 प्लस just a second no some mistake is there 8 by 10 सर आपने that is ठीक किया 8 ही आ रहा है इसका आंसर सर 8 ही आएगा 8 ही आएगा यस सर यहाँ कैलकुलेशन तो गलत तो नहीं हुई है वैसे मैं ठीक कैलकुलेशन सर 16 प्लस पहले मुझे भी 2 आया था अब 8 आ रहा है सर 8 ही आ रहा है 8 ही आ रहा है ना यस यस सर सर ओके 10k नहीं मुझे कैसे आ रहा है 16 प्लस हाँ मैंने 2k लिखा है वहां पे शायद मैंने वहां गलती की है क्वेश्चन को ठीक है फाइन दिस इज 8 इज आंसर फाइन 16 plus 8 yes that's correct k is 8 सॉरी बेटा आई एम सॉरी जो 8 बोल रहे हैं वही ठीक है मे बी दिस टाइम क्योंकि ये ऑप्शंस नहीं ना इसमें तो k is equivalent to 2 आई थिंक these are the all गेट और भी कोई न्यूमेरिकल हो तो यू कैन सॉल्व दैट मुझे नहीं लगता कोई इससे डिफिकल्ट नहीं है इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कन्वेंशनल क्वेश्चन व्हाट्स दैट कन्वेंशनल क्वेश्चन sometimes this was asked somewhere in the Indian engineering services ठीक है आसान सा क्वेश्चन है it's not so difficult just मैंने एक कहीं से लाया था ये I don't know yeah कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है कैन यू सॉल्व दिस आप पहले इसको सॉल्व कीजिए आई विल गिव 2 to 3 minutes ये यहाँ कुछ नहीं है दिस आई हैव क्रॉस दिस इज एन इनपुट दिस इज नथिंग सो इट्स गोइंग फ्रॉम लाइक दिस इनर लूप इज देयर आल्सो द सिस्टम गिवन इन फिगर इज अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम वेरी क्लियरली because outside there is a unity feedback with minor feedback loop and there's also a minor feedback loop in absence of the derivative that means in absence of the derivative feedback that means a is 0 determine the damping ratio and undamped natural frequency that means first you have to take a equal to 0 second time you have to include the constant a which will increase the damping ratio to then at that time xi will be given to you you have to determine the value of a that time and also you have to find the overshoot in both the cases maximum overshoot so this is a conventional question I will give you some time can you solve this rutba यस सर can you solve this मैं देख रही हूँ ना क्या देखना है इसको roll number 6 यस सर यस सर what you are getting from the question what's the idea you are getting सर ये क्या पहला पार्ट इसका आया ये ओमेगा आया 2.83 just a second ओमेगा आपका √8 आया था यस सर √8 और जाई आया That's correct. 0.353 100% correct. Second, अब आपको क्या करना है? You have to solve the minor loop. कैसे करना है solve? Feedback loop है ये. So सर you are फीड use the closed loop transfer formula. Use that. शाबाश. Very good. First question has been answered. Xi की वैल्यू क्या आई पहले में? सर जाई की वैल्यू है 0.353 Yes, that's correct. Very nice. Tanzib, यस सर are you doing something? यस सर यस सर शाबाश जल्दी. सारे क्वेश्चंस डिफरेंट है कि नहीं? रोल नंबर 9. यस सर लेकिन तुम्हें कोई आंसर सही नहीं आ रहा. आई डोंट नो व्हाई. सर ए निकला मुझे इसका 0.7 डैम्पिंग पे
सर 0.2449 बी पार्ट क्या निकला? आप ये तो निकाला पहले ही. A is equal to 0.2449 That's correct. Very good. What is xi? xi 0.7 है ना गिवन, Very good. तो हाँ. फाई निकला 45.57, ओवरशूट इसमें तो निकला सेकंड में तो आपको कांस्टेंट खाली निकालना था. यू हैव गॉट द कांस्टेंट, दैट्स ऑल. थर्ड मुझे बताइए, व्हाट इज एमपी इन बोथ द केसेस? परसेंटेज. सर ऊपर वाले में मेरे को निकला 0.3046 दैट्स करेक्ट. और परसेंटेज में निकालो ना इसको. वो हो गया ना 30.46%। 30.4. दैट्स फाइन. सेकंड में क्या निकला? सेकंड में निकाल रहा हूँ। वेरी गुड. रुतबा, आपको कोई आंसर आया कि नहीं? सर 4.3 आएगा सेकंड वाले में. 4.59 या 3, दैट इज फाइन. मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंसियरली बोले, मैं आई एम देयर टू सॉल्व. मेरा काम ही यही है. हाँ, रोल नंबर 5001 एहतिशाम, मैं सॉल्व करूं इसको या नहीं? सर किया मैंने. नहीं सर मैंने किया. उवैस रशीद, सर मैंने दो सॉल्व किए. करना है मुझे या नहीं? नो सर. ओके. 71 बुरहान, वो सिर्फ लीव करता है ना. बुरहान हमीद, यस सर. वीडियो क्यों नहीं ऑन किया आपने? आपकी आवाज पहले ब्रेक हो रही है. रोल नंबर 9 जरार, यस सर। डू आई नीड टू सॉल्व इट और यू कैन सॉल्व इट? सर किया सॉल्व। वेरी गुड. चलिए, लास्ट क्वेश्चन इज देयर. ये तो हो गया हमारा. आई हैव नॉट सॉल्व्ड इट. Okay, what more question was there? This question you have to solve. This is an engineering services examination question. Another, a system of GFS is equal to K divided by S plus 1 plus ST with unity feedback, where K and T are constants. The overshoot is to be reduced. That means overshoot is given, is to be reduced from 75 to 25. Find the factor by which K should be multiplied. It's a very important question. Find the factor by which, so I will give you a hint. You have to find the closed loop transfer function. This is a very clearly an open loop transfer function. G of S, HFS is 1. And that's why he's telling with unity feedback. So that means clearly it's an open loop transfer function. You have to find the closed loop transfer function by formula. C of S by G of S is C of S by R of S is G of S divided by 1 plus G of S H of S. H of S is 1 in this case. So you will get some value. You have to compare the equation with the second order characteristic equation. Find the value of xi and omega. Once you find the value, first overshoot you will take 0.75 MP. Second overshoot you will take 0.25 MP. Then once you do it, you will get the two values of xi, and then you have to take the ratio of xi. I hope I have got some time. 1 o'clock I can solve this for you. This is very important, and the question is from the engineering services examinations. Now, solution to this numerical, I'll show it. Don't worry now. And this last one you have to do yourself. C of S by R of S is, we know that formula we have to use because this is an open loop transfer function. You have to identify that now. Y HFS, HFS is 1 here. Given HFS is 1. Okay, so this we already know. Okay, then I need to find C of S by R of S. C of S by R of S is K divided by, K divided by S into 1 plus ST whole divided by 1 plus K S into 1 plus ST. You can do it yourself also. आप खुद भी कीजिए. Later on you can compare it.
जो कर रहे हैं उनको वो आप कंटिन्यू कीजिए. S square of t plus S plus k. So you can see here S square of t can here plus k, and this denominators will cancel. So because I have to get a standard second order system transfer function, so that is the standard should be S square has to be there. So I will divide by t, so S by t plus k by t. So that's what I have got here. Now I am going to compare this. This is the equation number 1 which I have got. I am going to compare this equation to second order general. I am not going to write that now. That everybody knows. You have to memorize it. S square plus 2 xi omega n s plus omega n square. So you have to compare the characteristic equation. Now characteristic equation always is denominator. So if I compare these, so 2 xi omega n will be 1 by t. Okay. And then what I have to compare again, omega n square. These two are omega n square will be k by t. Okay. Now what I can write, omega n I can write k by t under root of k by t. Okay. And 2 xi omega n. So I will get xi I will get from here is 1 by 2 omega n t. Xi I am going to get 1 by 2 omega n t. So I can put this here 1 by 2 omega n value is under root k into omega n value is what? Under root k by t, under root k by t, and we have t here. So okay, that is the value of psi we are getting. So psi we will be getting 1 by 2, and I will write this. So what I will get, this under root and 1 of the t will get cancelled. So it will be 2 under root of kt. So this is the value of psi we are getting from here. Fine. From this problem, it is given that overshoot has to be decreased. That means first overshoot is MP is 0.75. So if MP is 0.75, the formula of MP is e raised power minus pi xi divided by under root of 1 minus xi square, and that multiplied by 100. But that is given. Let us say we can substitute the xi equal to xi1 because this is the first overshoot. So that MP will come out to be, if we do not consider this 100 here, though that will be 0.75. We don't have to consider the percentage now. Will be equal to e raised power minus pi xi1 divided by under root of 1 minus xi1 square. So this is the one. So you can apply the natural log on both sides. Natural log 0.75 log e raised power n log natural log of e is 1. So we'll get only minus pi xi1 divided by under root of 1 minus xi1 square. So natural log value you are going to get is 0.09157, and that will be xi1. Oh, that is including this 3.15. I have divided here only. All the calculation negative will get cancelled. This will come out to be this one. So you have to check these calculations yourself. Okay. So then what we have to do, okay, we can squaring both sides. We can square it. So that value will come out to be 8.385 into 10 to the power of minus 3 into 1 minus xi1 square equal to xi1 square. So if you will get the value of xi1 here as
0.0912. So that is what we have got the value of xi1. Second, similarly, second case MP is given 25%. So you can take xi as xi2 and you can calculate xi2 value will be in this case as, I have not calculated, you can calculate this on the similar grounds, you can calculate 37. Okay. Thus, there is a change in MP that involves xi from, so change in maximum overshoot involving xi from where? Involving xi from 0.0912 to 0.4037. So xi had changed from this value to this. Now xi1 was equal to what? 1 by 2 under root, we will call it k1t, and under root k1 we can write, because we have to find range of k. What's the, so, yeah, find the factor by which k should be multiplied. So that's what we have to find. K1 will be 1 by 2 xi1 under root of t. And similarly, you have xi2 as 1 by 2 under root of k2 of t. And similarly, okay, then after that you can take ratio of xi2 by z1, taking ratio of xi2 by xi1. So xi2 by xi1 is equal to 1 by 2 under root of k2 of t multiplied by 2 under root of k1 of t. So you will get 2 and 2 gets cancelled, under root of k1 k2, tt gets cancelled. So xi2 by xi1 value will be, that is 0.0921 and divided by this. So that is 4.431. That's the value of this xi2 by xi1. It is very clearly k1 by k2. Okay. Now, under root you can take squaring both sides. So then once you square it both sides, you will get 19.637. That will be k1 by k2. And in this case, k2 will be k1 by 19.637. So k2 will be multiplied by k1 by a factor of 509 k1. So we can say here gain must be reduced by factor of 0.0509. It's a very simple question. You have to just see the calculations. So last question will be for your homework. This question, you can solve the minor loop and then you can solve this again. The step input is given. Okay, Tanzib, you can send the log. Okay. Okay, sir. सर किया मैंने. Okay, you can leave. Fine. सर जी बेटा. अस्सलाम वालेकुम सर वाइवा. Okay, मैं आपका नंबर क्या है आपका? Rest सर can leave. सर Rest people can leave. Just a second, आपका वाइवा अभी लेंगे.
ओके, हाँ जी बेटा। यस सर। रेस्ट कैन लीव, ओनली समरीन विल बी देयर, उसका वाइवा रह चुका था। रेस्ट बेटा, आपका सिलेबस क्या था? सर वो क्लोज लूप सिस्टम और वो सर ब्लॉक डायग्राम्स का जो था। ओके, जस्ट लेट मी, मुझे अपडेट करना पड़ेगा ना कॉपी पे, इसमें मैंने, कब एग्जाम हुआ था आपका लास्ट टाइम? सर माइनर फर्स्ट का कहाँ हुआ था? नहीं आपका नहीं, क्लास का तो हुआ था ना वाइवा। सर 23rd को हुआ था स्टार्ट। 23rd व्हाट, अगस्त? यस सर। देखना पड़ेगा ना, डेट कहीं मैंने लिखा होगा, 23rd अगस्त, यस। इंटरनल वाइवा बेटा आपका समरीन अल्ताफ, लेटर मैंने लिखा है यहाँ पे, लेट मी चेक इट। ओके बेटा, आप मुझे बताइए फर्स्ट, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम? सर ओपन लूप सिस्टम में आप पहले फीडबैक अपना नहीं। ये ऑन कीजिए, वीडियो ऑन यस सर। कीजिए। ओके, सर ओपन लूप सिस्टम में सर फीडबैक नहीं होता है और क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक होता है। और ओपन लूप सिस्टम जो होता है उसकी सर्किटरी जो सिंपल होती है और क्लोज सिस्टम की कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी होती है। ओपन लूप सिस्टम में जो अनप्रिडिक्टेबल डिस्टरबेंसेस की वजह से मतलब प्रॉपरली काम नहीं करता है सिस्टम, लेकिन फीडबैक सिस्टम में जो अनप्रिडिक्टेबल डिस्टरबेंसेस की वजह से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, सिस्टम अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है। और सर उसमें जो ओपन लूप सिस्टम में स्मॉल विड्थ होता है बैंड विड्थ और उसमें लार्ज बैंड विड्थ होते हैं क्लोज लूप सिस्टम में। एक मुझे बताइए आप, व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुएटर? एक्चुएटर क्या टर्म है? सर एक्चुएटर डिवाइस होती है जो इंडिपेंडेंट होती है कंट्रोल सिस्टम की, जो कैपेसिटर को मतलब लार्ज पावर एक्सर्ट करता है, फोर्स और टॉर्क ज्यादा जनरेट करता है सिस्टम में। ओके, ओके, now if we have to consider an automatic vehicle, can you explain how it works on the closed loop system? सर इसमें एक्सल में एक सिस्टम लगा हुआ होता है। What is the name of system? ऐसे तो नहीं ना है? Okay, closed loop system का principle मुझे बताइए, what it happens, error के साथ वो सारा चीजें, but principally how it works. सर क्लोज लूप सिस्टम में ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, वो मतलब वो ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ह्यूमन इंटर, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑन इंजीनियरिंग बेसिस, जो उसका वो बेसिस मैंने बताया था ना आपको, कि एरर सिग्नल जनरेट, एरर किसको देते हैं, वो सारा प्रिंसिपल यू हैव टू टेल मी हाउ इट एक्जैक्टली वर्क्स। ओके, मेजन्स गेन नहीं था आपका ना, नहीं ब्लॉक सर। डायग्राम था कुछ? यस सर, उसके रूल्स थे ना। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द समिंग पॉइंट? सर समिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सारी सिग्नल्स मीट करती है। ओके, व्हाट इज द अनदर नेम गिवन टू समर? सर ओके, व्हाट इज द प्रोसेस? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? सर प्रोसेस होता है जो एक नेचुरल फिनोमेना होता है जो कंटिन्यूअसली होता रहता है, सक्सेशन प्रोग्रेसिव। फिर मतलब ये सर ये मतलब नेचुरल प्रोसेस होता है जो मतलब जिसमें हर एक स्टेप ऐड होता जाता है इस प्रोसेस में। last question to you is, what do you mean by what's the meaning of the word control variable?
सर कंट्रोल वेरिएबल होता है जिसको हम मॉनिटर और मेंटेनेंस करते हैं मतलब सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका हम वेरिएबल एक्चुअल वेरिएबल से जो मतलब जो मेंटेन और मॉनिटर्ड हो रहा होता है। Okay, beta. You can leave. Thank you. थैंक यू सर।